चलो, let us start the next topic. That is, you have already aware about this topic in class. I think in class 11 or in 12, you have learned in physics. Physics में आपने पढ़ा है ये topic, वेक्टर कैलकुलस. आई थिंक प्लस टू में शायद मैथमेटिक्स में भी था ये, एक थर्ड यूनिट, लास्ट यूनिट थी. यस सर था. यस सर. ठीक. तो वही जो है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है या थोड़ा सा मैथमेटिक्स में पढ़ा है, वी एक्सटेंड दैट टॉपिक. उसी टॉपिक को हम एक्सटेंड करेंगे. Particularly, there are two physical quantity. One is a scalar quantity, another is a vector quantity. That is physical quantity. There are particularly we would like to study this topic, that is vector calculus. Particular, there are two physical quantities. One is a scalar quantity and another is a vector quantity. Physical quantity having only magnitude, and scalar quantity that is having only the magnitude, and vector quantity they having the magnitude as well as direction. यानी जो आपके पास जिस क्वांटिटी के पास में मैग्नीट्यूड भी है और उसकी डायरेक्शन भी है, दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. उसको हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं. दैट इज पार्ट ऑफ द वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर क्वांटिटी. अब हम इसी वेक्टर क्वांटिटी को फंक्शन की फॉर्म में पढ़ेंगे. वी वुड लाइक टू स्टडी दिस वेक्टर क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन. फंक्शन जैसे कि आपने रियल वेरिएबल्स जब हम पढ़ रहे थे, यानी प्लस टू में भी पढ़ा है आपने, पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा है. फंक्शन दैट इज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशन, that is particular named as a function if it satisfies some particular condition. That is, for every element of a non-empty set associated with unique element of another set, that is called the function. उसी function को जो real variable में function था, scalar function, scalar quantities में जो function था, we would like to define that function in vector quantity. उसको हम vector की फॉर्म में हम डिफाइन करना चाहते हैं. दैट इज वेक्टर फंक्शन. दैट इज नेम्ड एज ए वेक्टर फंक्शन. दैट मीन्स if to each value of a scalar variable t, there corresponds a value of a vector named as r, then, because as we have already discussed, the vector having the magnitude as well as direction, this arrowhead shows the direction, that is vector quantity. Then this vector r is named as a vector function, is named as a vector function of the scalar variable, of the scalar variable t. And we can write, and we should write as this vector r is like this one, f of t. Vector r is a function of t. That is, t is a scalar variable. For each scalar variable t, there corresponds a unique value of vector r. Then this vector r is called the vector function. As per the definition we have already studied of the function. For example, the position vector. The position vector r of a particle moving along the
along the curve, along the curved path is a vector function of time t, is a vector function of time t. Time t is what? That is a scalar. Time t is what? That is a scalar. यानी जैसा कि ऊपर हमने डेफिनेशन दी है, इन द सेम डेफिनेशन, क्योंकि हमने अपने पोजीशन वेक्टर, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, वो आप पढ़ चुके हैं। उसी संदर्भ में हमने उसी कैटेगरी में वी कंसीडर एन एग्जांपल द पोजीशन वेक्टर आर, द पोजीशन वेक्टर आर that represents the position of a particle with respect to the different direction. If we consider in the plane, that is x-axis or y-axis, the position vector can be defined in the two coordinate system. And similarly, if it is a 3 dimension, तो उसी तरह से position vector define कर सकते हैं हम। r of a particle moving along a curved path is a vector function of time t, is scalar. Since every vector can be expressed as a linear combination of 3 fixed non coplanar vector, 3 fixed non coplanar vectors uniquely therefore, so we can write that f of t, that vector function can be write as this one, f1t I, f2t j plus f3t k, where I, j, k denote unit vectors along the coplanar axis, along the coplanar axis, x-axis, y-axis, z-axis respectively, and f1t, f2t and f3t are named as the components of the vector f along the coordinate axis. This coplanar also can be named as a coordinate. This जो coplanar हमने लिखे हैं, इसको हम coordinate axis भी बोल देते हैं. That is named as a, that is better name, coordinate axis along the coordinate axis. That is x-axis, y-axis, z-axis. X-axis, y-axis, z-axis, coordinate axis. ठीक है, यानी दिस फॉर्म इज नेम्ड एज ए कंपोनेंट फॉर्म. ये जो फॉर्म है ये आपकी एक तरह से कंपोनेंट फॉर्म है, क्योंकि हमारे 3 कंपोनेंट यानी आई जे के की फॉर्म में दिए हुआ, दैट इज नेम्ड एज ए कंपोनेंट फॉर्म. दिस वेक्टर हमने कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. दिस इज अ वेक्टर फंक्शन वी डिफाइन एज ए वेक्टर फंक्शन. नाउ कम टू द पार्ट ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर फंक्शन. जैसे कि हमने डेरिवेटिव सिंपल
डेरिवेटिव लिया है, 12th क्लास में भी पढ़ा है आपने, पीछे टॉपिक भी पढ़े हैं, तो यू कैन गो थ्रू दैट वन अगेन। द सेम टाइप में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर फंक्शन with respect to a scalar, because we consider this t as a scalar quantity, this f, or you can say the r vector, or you can say the this f vector is a function, vector function. For this part, let derivative can be defined as we discussed, as you well known इन द केस ऑफ द सिंपल डेरिवेटिव। जैसे कि सिंपल डेरिवेटिव में था, बिल्कुल सेम वे से हम यहाँ पे वेक्टर फंक्शन को में भी हम सेम तरीके से डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव हम क्या ले लेते हैं, फर्स्ट वी कंसीडर द स्मॉल चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देन वी टेक द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। देन वो चेंजेस हमने ले ली, उसके बाद वो चेंजेस लेने के बाद उस चेंजेस को यानी पुराने ओरिजिनल वेक्टर से हम सब्ट्रैक्ट करते थे, ओरिजिनल फंक्शन से हम सब्ट्रैक्ट करते थे, सो दैट वी कैन गेट द चेंज, व्हाट विल बी द चेंज। तो चेंज आती थी, उसके बाद हम एवरेज चेंज लेते थे, उसके बाद प्रोसीडिंग द लिमिट दैट इज रेट ऑफ चेंज, दैट विल बिकम द डेरिवेटिव। वही सेम चीज यहां पर बनती है वेक्टर फंक्शन के अंदर। r is equal to be f of t, be a vector function, be a vector function, vector function of the scalar variable, of the scalar variable t, let delta t be a small change, or you can say the increment, small change in t, and delta r be the corresponding change in r, change in vector r. Then what will be, then r plus delta r will become f of t plus delta t. Then change original vector we have, that is r is equal to be f of t. This is particularly 1, this is particularly 2, because it is written as earlier. ये हमने जो हमने लिखी थी वही है, यहाँ पर हमने सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म में ली है। देन जैसे कि हम सिंपल फंक्शन में हम डेफिनेशन की डेफिनेशन लेते थे चेंज निकालने के लिए, देन उसी वे से सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3 and 2 minus 1 we get, subtract equation 1 from 2, we get delta r is equal to be f of t plus delta t minus f of t. This will be the change. Now to get the average change, dividing both sides by delta t, so we get this arrowhead on the cap of r के ऊपर ही है, and average change dividing both sides by delta t, we have delta r divided by delta t is equal to be f of t plus delta t minus f of t divided by delta t. This is the average change. Now to get the rate of change, proceeding limit delta t tends to 0. So it will become limit delta t tends to 0
वो लिख देते हैं लिमिट पूरा, डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी टेंस टू 0, एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी divided by delta t. If the right hand side exists, if right hand side exists, as it becomes the question of limit exists, then the value of this limit is denoted by dr upon dt, that is named as a derivative of r with respect to t, and is called the derivative of vector r with respect to scalar quantity scalar t, with respect to scalar t. तो हमने कहा है कि राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करती है तो हमारे पास में ये डेरिवेटिव बन जाता है. अब सिंस dr upon dt is itself is a vector function of t, its derivative is denoted by, since dr upon dt is itself a vector function of t, its derivative means which derivative? For dr upon dt, that means the second order derivative is denoted by d square r upon dt square, and is called the second derivative, and is called the second derivative. Derivative of vector r with respect to t, scalar quantity t. Similarly, we can define the higher order derivative, and similarly one can define higher order derivatives. Now, some general rules for the differentiation for this vector function, that the rules which we have already considered in the simple scalar functions, the same rule will be applicable here. The general rules. For differentiation. General rules for differentiation. That if vector A, vector B, and vector C are vector functions of a scalar t, and phi is a scalar function of t. Phi is a scalar function of t. What we consider A, B, C are the three vector function. ये हमारे हमने माने एक वेक्टर फंक्शन है t के,
और फाई मैंने माना वो स्केलर फंक्शन है टी का, स्केलर फंक्शन है टी का, देन वी हैव जनरल रूल्स इज that is derivative of vector A, either it has a plus sign or minus sign, or vector B, that is equal to be derivative of A plus, either we have plus then consider plus, if we have minus that consider minus, derivative of B, vector B. Similarly, second rule, that is because in vector functions, if we have two vectors, then in product we have two types of the product. One is a dot product, another is a cross product. This is a dot product. This is a dot हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Derivative of vector B plus derivative of vector A dot with B. We can consider this commutative law, यानी आगे पीछे भी कर सकते हैं, because in dot product commutative law holds. This is a simple product rule. Whatever we have studied earlier, product rule, बिल्कुल same rule यहाँ पर applicable है in vector function. That is because vectors के अंदर दो टाइप की डॉट प्रोडक्ट्स होती हैं, वन इज ए डॉट प्रोडक्ट एंड देयर इज स्केलर प्रोडक्ट। पहले हमने डॉट प्रोडक्ट का लिया। डॉट प्रोडक्ट कैन बी कम्यूटेटिव, उसमें कम्यूटेटिव होल्ड करता है, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट नीड नॉट बी कम्यूटेटिव, वो जरूरी नहीं है कम्यूटेटिव हो। तो दिस इज द रूल फॉर द क्रॉस प्रोडक्ट। सिमिलरली वी कंसीडर वी हैव बोथ आर वेक्टर्स, दोनों के दोनों वेक्टर्स थे। अब हमारे पास में एक वेक्टर फंक्शन है, दूसरा स्केलर फंक्शन है। इन दैट केस आल्सो दी जो product rule था, same rule will be applicable here also. 5 times of the derivative of A plus derivative of 5 into vector A. If we have the cross product of the three vectors, that is scalar triple product. Scalar triple product. Scalar triple product can be written as this one, A, B, C. This is scalar triple product. हम इसको, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, दैट मीन्स ए बी सी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये होती है ए डॉट बी क्रॉस सी। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट which can be represented like this one. It can be written as derivative of the A in that scalar triple product plus derivative of B, another two are as it is, again in the scalar triple product, plus derivative of the third, another two are as it is. This is the rule applicable as we have discussed. And तीन फंक्शन हो तो तीन फंक्शन में वो प्रोडक्ट रूल कैसे एप्लीकेबल होता है, उसी तरह से यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एप्लीकेबल होता है। और सेम रूल भी एप्लीकेबल इन दी स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर सेम रूल भी एप्लीकेबल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू बी। पहले भी बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट में आपने जो पोजीशन है दैट कैन नॉट बी चेंज, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो उसमें पोजीशन चेंज करना गलत हो सकता है।
dB upon dt cross with C. Similarly for the third part, A cross B cross dC upon dt. ये जो रूल हमारे पहले थे, सेम रूल भी एप्लीकेबल इन दी वेक्टर फंक्शंस. वेक्टर फंक्शन के अंदर सेम रूल एप्लीकेबल हैं. तो एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो हमने ये लिया है, वी कंसीडर यहां पर जो लिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसमें आप ऑर्डर साइक्लिक में चेंज कर सकते हैं, यानी ए बी सी, सिमिलरली सी बी सी ए, सिमिलरली सी ए बी, इस तरह से साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं चेंज कर सकते. लेकिन इसमें आप कुछ भी नहीं चेंज कर सकते क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास में जो है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता. दीज आर द सम जनरल रूल फॉर द डेरिवेटिव्स व्हिच are applicable for the general function as well as for the vector function. Now come to the part of the derivative of the constant vector. जैसे वहां पर डेरिवेटिव हमारे पास में constant function का डेरिवेटिव होता था, that is 0. Same will be considered here also, derivative of a constant vector. वहां simple constant function लेते थे, यहाँ पे constant vector ले रहे हैं. Derivative of a constant vector. A vector is said to be constant. First we consider what constant vector क्या होता है. A vector is said to be constant if both its मतलब its magnitude as well as direction are fixed. If both its magnitude and directions are fixed, उसकी magnitude भी fix हो, direction भी fix हो, then that vector function is named as a constant function. If either of these changes, the vector is not constant. अगर दोनों में से कोई भी एक चेंज होता है तो इसका मतलब वो वेक्टर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है. लेट r vector r be a constant vector, be a constant vector, constant vector function of the scalar variable t, scalar variable t. Then let r vector r is equal to be like this one, f of t vector implies r can be written as, because r is a constant function, r can be written as this one, because no change in the r as we change in the t, because it is a constant function. So that is implies f of t plus delta t minus f of t will become 0 vector. Therefore dr upon dt is equal to be limit delta t tends to 0, f of t plus delta t minus f of t divided by delta t is equal to be limit delta t tends to 0 on 0 vector, that is simply 0 vector, because there is no delta t in this vector. So as it is vector itself as it is, there is no change, thus the derivative of a constant vector is equal to be 0 vector. Therefore the derivative of a constant vector is equal to the 0 vector, or also named as a null vector.
तो जीरो वेक्टर भी कहते हैं, नल वेक्टर भी कहते हैं। एज पर द यूजिंग दिस वन, देयरफॉर you can consider as a remark, since I, J, K are unit vectors fixed unit vectors being fixed, being a constant vector, being a constant vectors, di upon dt, upon dt is equal to dj upon dt is also equal to dk upon dt is equal to the zero vector. Derivative of these unit vectors in the direction of coordinate axis, x axis, y axis, z axis will become 0. Next, derivative of a vector function in terms of the component form, which we have already defined. जो component form हमने define की थी, अब उसका derivative लेते हैं. Derivative of the first rule, जो first general rule हमने apply किया था, that rule, जो हमने general rule define किया था, that rule be applicable. Derivative of a vector function in terms of its component. In terms of its component. Let vector R be a vector function of the scalar variable t. Let vector R is equal to xi plus yj plus zk in the component form, where x, y, z are components x, y, z are, or you can say not like this one, where component x, y, z, where component x, y, z are scalar function of t, a scalar function of t. Therefore, you consider the derivative, that is dr upon dt is equal to b, as per the rule of the general rule we have we have defined above, first rule or second rule, third rule, that is ddt of xi plus ddt of yj plus ddt of zk. पहले तो सबसे पहले हमने फर्स्ट रूल अप्लाई किया. नाउ फिर सेकंड रूल तो हमारे पास में क्या था, सेकंड रूल में डॉट प्रोडक्ट थी, थर्ड रूल में क्रॉस प्रोडक्ट थी, फोर्थ रूल फाई इज ए स्केलर फंक्शन, ए इज ए वेक्टर फंक्शन, तो फोर्थ रूल भी एप्लीकेबल. नेक्स्ट फोर्थ रूल भी एप्लीकेबल, यानी एक्स आपका एक तरह से स्केलर फंक्शन है, आई आपके पास में वेक्टर फंक्शन है, तो उसी तरह से उसी जो वो रूल एप्लीकेबल होगा, दैट इज एक्स इंटू डी आई अपॉन डी टी प्लस dx upon dt into I, then y into derivative of this dj dt
plus derivative of y j as it is plus z as it is derivative of k plus derivative of z with respect to t and k. As we have mentioned earlier in the remark, that is derivative of I, j, k are 0. These are the derivatives of I, j, k that will be applicable here. It means this will become 0, this term will become 0, this term will become 0, and this term will become 0. These three terms will be vanishes. ये तीनों टर्म आपकी खत्म हो जाएंगी. Only left behind we have, that is dx upon dt I plus dy upon dt j plus dz upon dt k. This is the derivative of a vector function in component form. Derivative of a vector function in component form. If we consider this x, because we have already consider x and y and z are the functions of t. So it means if x we consider as a function of t like this one, y is a function of t like this one, and z is a function of t like this one, then vector r will become f1 t I plus f2 t j plus f3 t k implies dr upon dt will become derivative of this first f1 dash t I, derivative of this second f2 dash t j, and derivative of third f3 dash t k. This will be the derivative of a vector function in component form, and these are the differentiate its component form. ये आपके पास में components बन जाएंगे. Next we consider if f of t, जो हमने function माना है f of t, या यहाँ पे small है, we can consider another f of t capital. अगर वो constant, सिर्फ constant magnitude का है, अगर अभी तो हमने कांस्टेंट फंक्शन माना, कांस्टेंट फंक्शन मींस हैविंग डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड इज फिक्स्ड. अगर दोनों में से कोई एक चीज फिक्स्ड है, यानी उसकी डायरेक्शन फिक्स है, तो क्या होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स है, देन व्हाट विल हैपन फॉर द इन द केस ऑफ द डेरिवेटिव. फर्स्ट वी कंसीडर इफ f of t, we consider a function f of t has a constant, has a constant magnitude. मैग्नीट्यूड हमने कांस्टेंट माना है. In that case, what will happen? So let f of t has a constant magnitude, has a constant magnitude, implies this magnitude of f of t is right as that is equal to be constant. So it means, therefore, dot product of two vectors, as we have already discussed, we are already aware about this one. This can be written as like this one. Dot product of two vector is square of its magnitude, which is constant, which is constant. This implies derivative of constant function, as we know that the derivative of the constant function is 0. So derivative of this f dot f, it will become a 0. Derivative of f dot f will become a 0. But in left hand side, what will happen? As we apply the general rules, f dot df upon dt plus df upon dt dot f is equal to be 0. This implies, because dot product is commutative, so it will become twice of f dot df upon dt will become 0.
That means f dot df upon dt is equal to be 0. Means if a vector f have the has a constant magnitude, then dot product of f with its derivative will become 0. As we know, the when two vectors are if dot product of two vectors are 0, then they are perpendicular. They are perpendicular. Implies df upon dt is perpendicular to f vector. df upon dt is perpendicular to vector f if it has constant magnitude. अगर उसका magnitude constant है तो उसका derivative जो है उस vector के perpendicular होता है. Now consider the case of if vector f has a constant direction. अगर उस vector f की constant direction है, if f of t has a constant direction, then what will happen? Constant direction. That means let this f of t magnitude is equal to the f of small f of t, and g of t be a unit vector in the direction of f of t, implies vector f of t is equal to be magnitude into its direction, magnitude into its direction. ये हमारे पास में डेफिनेशन है वेक्टर की. अगर आपके पास में उसकी डायरेक्शन पता है और मैग्नीट्यूड पता है तो प्रोडक्ट ऑफ दोस विल बी द वेक्टर. Therefore their derivative will become derivative df upon dt will become f as it is derivative of g plus df upon dt into the g. As g is the direction, if is constant, is a constant vector, thus dg upon dt will become 0 vector. Therefore from 1 we have, that means this part will become 0 because dg upon dt will become 0. Only the second part remaining in the equation number 1, only the second part in the upon dt is equal to be df upon dt into vector g. What will happen if we consider the cross product of the df upon dt with the vector f, that is df upon dt, between the vectors small f and small df upon dt is a, both are constant, both are scalar quantity, those comes out. Only the cross product between the vectors, and as we already about the vectors, cross product of a vector itself will become 0 vector.
cross product of a vector itself always becomes a 0. So right hand side is 0. It means f cross df upon dt will become 0. This will happen when f of t has a constant direction. अगर f of t की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो आपके पास में ये बन जाएगा f क्रॉस df अपॉन dt विल बिकम 0. ये बन जाएगा आपके पास में. ठीक है, ठीक है भाई. Yes, sir. Yes, sir.